नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसबीआई सिक्योरिटीज़ वीकली पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट पे हम डिस्कस करेंगे की लेवल्स और बात करेंगे मेन सेक्टर्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में फोकस में रह सकते हैं। शुरू करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक से। फॉर द सेकेंड कॉन्सिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी ने वीक को पॉजिटिव नोट पर क्लोज किया है, जो चल रही रिकवरी के स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करता है। पिछले 2 हफ्तों में इंडेक्स ने लगभग 700 पॉइंट्स का ग्रेजुअल पुल बैक दिखाया है और अभी अपने लास्ट 8 वीक्स का हाईएस्ट वीकली क्लोज दिया है, जो इम्प्रूविंग सेंटिमेंट और टेक्निकल रेजिलियंस का क्लियर साइन है। अभी निफ्टी डेली स्केल पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट के वर्ज पर है, जो अक्सर एक शार्प डायरेक्शनल मूव के पहले आता है। इंडेक्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और दोनों ही अप स्लोप अपवर्ड कर रहे हैं, जो बुल्स के लिए एक एनकरेजिंग सिग्नल है। Momentum indicators are also turning constructive. The daily RSI has climbed above the 60 mark for the first time since July 2025, indicating strengthening momentum. Meanwhile, the MACD remains in buy mode, and the rising MACD histogram suggests a pickup in the upside momentum. The market breadth has improved significantly in the recent sessions. Among the Nifty constituents, 82% of the stocks are trading above their 20-day EMA, while 76% are above their 50-day EMA, highlighting broad-based participation in the rally. With technical indicators aligning positively and the internal strength improving, Nifty appears well positioned for a potential breakout. Talking about the crucial levels, the zone of 25,150 to 25,200 will act as an immediate hurdle for the index. Any sustainable move above the level of 25,200 will lead to a sharp upside rally up to the level of 25,500, followed by 25,700 in the short term. While on the downside, the zone of 24,950 to 24,900 is likely to provide a cushion in case of any immediate decline. Talking about Sensex technical outlook, for the second consecutive week, the benchmark index Sensex ने पॉजिटिव नोट पर क्लोज किया, जो ब्रॉडर मार्केट में चल रहे रिकवरी की स्ट्रेंथ को रीइंफोर्स करता है। वीकली चार्ट पर इंडेक्स ने एक बुलिश कैंडल बनाई है, जो सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट और इंप्रूविंग सेंटिमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। डेली टाइम फ्रेम पर सेंसेक्स अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के ब्रेकआउट जोन के पास पोजीशनड है। ये एक टेक्निकल सेटअप है जो अक्सर एक शार्प डायरेक्शनल मूव के पहले आता है। अगर इस फॉर्मेशन से सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है तो आने वाले सेशंस में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। Adding to the bullish undertone, the index is trading above both its short and long-term moving averages, which have started to slope upwards. This upward tilt in the moving averages is a positive sign, indicating strengthening trend momentum. The momentum indicators are also turning constructive. The daily RSI is on the verge of crossing the 60 mark and is currently in a rising trajectory, suggesting improving strength and potential for further gains. With technical indicators aligning positively and price action showing signs of a breakout readiness, Sensex appears well positioned for a directional move. Talking about the crucial levels, the zone of 82,100 to 82,200 will act as a crucial hurdle for the index. Any sustainable move above the level of 82,200 will lead to a sharp upside rally in the index up to the level of 83,000, followed by 83,600 in the short term. While on the downside, the 100-day EMA zone of 81,200 to 81,150 will act as an immediate support for the index. Talking about Bank Nifty's technical outlook, बैंकिंग बेंचमार्क इंडेक्स ने अपनी पुलबैक रैली को सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वीक तक कंटिन्यू किया है, जो रीसेंट डिक्लाइंस के बाद एक शॉर्ट टर्म रिकवरी अटेम्प्ट को सिग्नल करता है। रीसेंट लो 53,561 से इंडेक्स ने पिछले 2 हफ्तों में 1200 पॉइंट से ज़्यादा के रिबाउंड किया है, जो सेंटिमेंट में थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाता है। लेकिन इस रिकवरी के बावजूद इंडेक्स अभी भी अपने 50 डे और 100 डे ईएमए के नीचे है, जो दिखाता है कि ब्रॉडर ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये मूविंग एवरेजेस अभी भी ओवरहेड रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और उनके ऊपर एक डिसाइसिव क्लोज एक सस्टेन अपट्रेंड के लिए क्रूशियल होगा। मोमेंटम फ्रंट पर डेली आरएसआई अभी साइडवेज जोन में है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जो स्ट्रेंथ बिल्डअप दिखाता है। अगर आरएसआई 60 के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो बुलिश मोमेंटम और वैलिडेट हो सकता है। Going ahead, the zone of 55,100 to 55,200 will act as an immediate hurdle for the index. Any sustainable move above the level of 55,200 will lead to an extension of pullback rally up to the level of 56,000 in the short term. While on the downside, the zone of 54,400 to 54,300 will act as a crucial support for the index. Talking about the key sectors to watch, talking about the Nifty India Defense Index first. So Nifty India Defense Index has given a downward sloping trendline breakout on the daily chart, signaling a shift in trend. The index has also surged above its key moving averages, which are now beginning to slope upwards, which is a bullish sign. Notably, the daily RSI has crossed the 60 mark for the first time since June 2025, indicating strengthening momentum.
With these signals aligning, the index is likely to continue its northward journey in the coming sessions. Talking about Nifty CPSE and Nifty PSE, they have also shown strength with both indices giving a downward sloping trendline breakout on a daily scale. This breakout suggests a potential shift in the trend, and we believe these indices are well positioned to outperform in the short term, supported by improving breadth and sentiment in the PSU space. Talking about Nifty IT index has recently formed an Adam and Adam double bottom pattern on a daily chart, a bullish reversal formation. The index is currently hovering around the neckline resistance of this pattern. It is trading above its 20-day and 50-day EMA, both of which are beginning to hedge higher. A sustainable move above the 36,500 level could trigger a sharp upside rally in the index, making it one to watch closely. इनके अलावा कई और सेक्टोरल इंडाइसेस भी कंटिन्यूड आउटपरफॉर्मेंस के साइंस दिखाते नज़र आ रहे हैं. निफ्टी मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शॉर्ट टर्म में अपना पॉजिटिव मोमेंटम मेंटेन करने की संभावना रखते हैं, जिससे स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन और फेवरेबल टेक्निकल इंडिकेटर्स का सपोर्ट मिल रहा है. So that's a wrap of today's edition of Weekly Podcast. Thank you for listening. Do tune in on Monday for more such market updates and insights. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.